morning and a warm welcome from one of the most amazing places that I've been to in recent times. मैं अभी खड़ा हूँ आइहोले में, कर्नाटका में. ये एक हिस्टोरिकल साइट है, बेहद खूबसूरत. मतलब इट्स जस्ट सो प्रिटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स. सो आइहोले बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी का पार्ट था. कुछ 6th से 12th सेंचुरी के बीच में काफ़ी एक्सटेंसिवली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है मंदिरों का. हिंदू टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स एज वेल एज बुद्धिस्ट टेम्पल्स. So there are about 120 temples in this small town itself and around this town, which is quite amazing. I'm here only for 2 days, so there's no way I can cover all of these phenomenal sites. But I'm going to show you a few of these as I walk around and show you the place. Now, आइहोले क्यों इतना important माना जाता है हिस्टोरिकली? उसका एक बहुत ही important reason है. आइहोले में जो टेम्पल स्टाइल डेवलप हुआ, that was kind of a mixture of North India and South India temple styles. अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ में बहुत सारे पुराने मंदिर बचे नहीं हैं. सो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी कि वहाँ पे किस तरह का टेम्पल स्टाइल था. एक्चुअली खजुराहो इज़ वन सच साइट जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत, बेहद खूबसूरत नॉर्थ इंडियन स्टाइल के टेम्पल दिखाई देते हैं. पर आइहोले ऐसी जगह है जहाँ पे मिक्सचर था नॉर्थ और साउथ का. यहाँ पे इनफैक्ट कहते हैं कि वो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स डेवलप हुए जो आगे जाके नॉर्थ में और साउथ में प्रेवलेंट हुए. सो इट वाज लाइक एन एक्सपेरिमेंटेशन ग्राउंड. आई थिंक इसीलिए शायद यहाँ इतने सारे मंदिरों को बनाया गया और इतनी सारी सेंचुरीज़ के थ्रू मंदिरों को बनाया गया. यहाँ पे कई सारे प्रोमिनेंट मंदिर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा लोग दूर से देखने के लिए आते हैं. लेट्स बिगिन आवर डे एंड लेट मी स्टार्ट विद द दुर्गा टेम्पल. So when you are at Aihole, the first temple that you have to visit, जो पहला मंदिर आपको आना ही पड़ेगा, वो है दुर्गा मंदिर. ये टाउन के एंट्रेंस पे ही है मंदिर, so you can't miss it. इसका नाम दुर्गा मंदिर है, but that's kind of anomaly. जो इसका पहला पर्पस था वो था सन गॉड के लिए टेम्पल, लॉर्ड आदित्य के लिए. But over the years, because it's so close to the fort, which is somewhere behind there, on the hill up there, we'll go there in a bit. इसका नाम दुर्गा फोर्ट हो गया. Fort is known as दुर्ग और किला, you know, so that's where the name Durga comes from. यहाँ पे दुर्गा की स्टैचू भी है, and there are other gods also here, but the main deity here is or used to be the sun god. इस मंदिर का जो शेप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. वो सेमी सर्कुलर शेप में है जो कॉमन नहीं है मंदिरों के लिए. इट्स अबाउट 6-5 इन द मॉर्निंग. ये 6 बजे सभी मंदिर खुल जाते हैं इस एरिया में, विच इज़ अमेजिंग बिकॉज यू कैन कम हेयर एट सनराइज एंड रियली. आज सनराइज कुछ खास हो नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी बादल है, बट दैट्स ओके. आई एम जस्ट गोना वॉक अराउंड एंड एंजॉय द प्लेस स्टिल. So this place reminds me a lot of Hampi, like a छोटा version of Hampi. Hampi गए हुए मुझे I think 20 साल हो चुके हैं. But yeah, I didn't know Aihole would be so beautiful. It's such a surprise, such a discovery for me because I just didn't know. मुझे पता था कि यहाँ पे एक बहुत famous दुर्गा मंदिर है, but there's so much more beyond that one temple. Of course, that's a stunning temple, but just walk around here and you'll discover these hidden treasures all over. अभी केवल 9:15 बजे हैं सुबह के और ऐसी खतरनाक गर्मी हो चुकी है. आई कैन नॉट इमेजिन दिन कैसा होने वाला है.
बट दैट्स अ लाइफ ऑफ अ ट्रैवलर. आपको निकल के दिन बिताना पड़ता है बाहर धूप में, एंजॉय करना ही पड़ता है. फ्रैंकली करना ही पड़ता है इज़ नॉट ट्रू फॉर मी, बिकॉज नो मैटर व्हाट द वेदर आई एम ऑलवेज हैप्पी टू बी आउटडोर्स. एनीवे, तो अभी हम जा रहे हैं मेगुटी हिल पे. मेगुटी हिल बेसिकली इस विलेज का हाईएस्ट पॉइंट है. यहाँ के रास्ते में एक बुद्धिस्ट टेम्पल मॉनेस्ट्री स्ट्रक्चर भी है, एंड दिस इज़ द ओनली बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर हेयर इन आइहोले. इस हिल के टॉप में एक फोर्टिफिकेशन है और वहाँ पे एक मंदिर है. So I've reached the top of the fort. There's no one here. दो बंदर दिखे मुझे दूर थोड़े. But otherwise there's no one up here, up on the Durg or the fort or the Killa. There's a very beautiful temple here, and I'm just gonna go explore that. But also the view from up here is pretty amazing. It's like the highest point within the town, within the village, I must say. And yeah, it gives a vantage view of all the temples and the village itself. So let's just soak in the beauty of this place, because I absolutely love this one. It's nice. अभी मैं नीचे जा रहा हूँ ऑन द वे डाउन फ्रॉम मेगुती हिल, और अभी चाय वाय ढूंढी जाएगी और कुछ नाश्ता किया जाएगा. It's quite amazing how quickly the weather changed. थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम था बाहर, and I came out to do some photography, and here I am taking shelter inside a temple because it's raining so hard outside. Gosh, hotel वापस कैसे जाएगा? I have no idea. So I moved from one small temple which got flooded because of the rains. तो मेरा बैग वगैरह सब गीला होने लगा था. So I moved to the main temple, the big temple. This is unlikely to ever get flooded, so I'm safe here. But सवाल ये है कि कब तक यहाँ पे इंतज़ार किया जा सकता है. It's like only 4:30 in the afternoon and it's pouring cats and dogs outside. अगर ऐसी बारिश रही तो I think eventually I'll have to walk to my hotel despite the rain. It's not coming down at all. If anything, it has gone up in the last 20 minutes or so. Let's see. तो बारिश तो कम हो नहीं रही है, और मुझे लगता नहीं कोई पॉइंट है यहाँ पे इंतज़ार करने का, क्योंकि अगर अंधेरा हो जाएगा उसके बाद गोइंग बैक वुड बी इवन मोर डिफिकल्ट इन द रेन. सो आई एम जस्ट गोना हेड आउट नाउ. थोड़ी सी लग रहा है कम हुई है, हल्की सी कम हुई है. सो मौके पे चौका लगाते हैं और होटल की तरफ प्रस्थान करते हैं. विश मी लक गाइस कि मैं आराम से अपने इक्विपमेंट को सेफली होटल तक पहुँचा सकूँ. दैट्स माई नंबर 1 प्रायोरिटी. सी यू इन अ बिट. My hotel is not really far away from here, तो I hope इतना टाइम ना लगे वहाँ पहुँचने में.
So finally managed to reach my hotel, but my hotel is a little bit shady. आइहोले में मेरा दूसरा दिन थोड़ा सा स्लो था. मैं एक बार दोबारा मेगुती हिल में गया सनराइज के टाइम पे, और उसके बाद सिर्फ गांव में घूमता रहा, कुछ फोटोज खींची, कुछ लोगों से बातें की, बट इन जनरल मैंने सिर्फ रिलैक्स किया. दिन का सबसे अच्छा पार्ट शुरू हुआ आफ्टरनून में. That's when something very interesting happened. शाम होने वाली अभी, और अभी हम लोग आए हैं रामलिंगेश्वर टेम्पल में, जो करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर है आइहोले से. मेरे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था, और उसने मुझे यहाँ आने के लिए, एक्चुअली ही गॉट मी हेयर ऑन हिज बाइक फ्रैंकली. सो ऑल थैंक्स टू सिद्धू, आई एम हेयर. सो दिस इज़, आ जाओ सिद्धू पास में. तो दिस इज़ सिद्धू कालमट, करेक्ट? हाँ सर, सही है. तो सिद्धू ने पढ़ाई, ही इज़ ग्रोन अप हेयर इन आइहोले, सब कुछ आइहोले में किया है, और ही इज़ एक्चुअली डन समथिंग सिमिलर टू व्हाट आई ऑल्सो डू, समथिंग इन टूरिज्म. ही डिड हिज MBA in tourism. And he wants to pursue his career in tourism. So that's quite amazing. Aihole बहुत छोटी सी जगह है. I never thought I would meet somebody I know, but it's really nice that I have him here. What's also really nice is that he got me here to a new place, क्योंकि काफ़ी दूर है, चल के आने में थोड़ी मेहनत लगती. So that's nice. हिंदी आती है थोड़ी हिंदी आती है, so he knows what I'm saying. But anyway, let's walk around and see this temple, and then we'll see what's so special about this place. Another interesting fact about this temple, ये मलप्रभा river जो काफ़ी pious river है, उसके banks पे है. तो it's just here. It's really beautiful. I'm sure sunset here is going to be amazing. There's something magical about old temples. I'm not even particularly religious, but maybe it's their history and their stories that draws me to them. Temples like these are so epic, so peaceful. You can sit here all by yourself all day long for hours and hours together, watch the sun go down, watch the life pass by. To me, memories like these are absolute treasures. शाम को जब हम आइहोले वापस आए, मुझे लगा मैं अपने घर वापस आ गया. It's quite amazing मैं कितनी जल्दी ट्रैवल के समय किसी भी जगह को अपना घर बना लेता हूँ. कभी कभी सिर्फ 1 या 2 दिन में. शायद इसी कारण से कभी भी मेरे लिए ट्रैवल स्ट्रेसफुल नहीं होता है. उत्तर कर्नाटका से ये ट्रैवल सीरीज सिर्फ अभी शुरू हुई है. अगले वीडियो में हम एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जाएंगे जो आइहोले के बिल्कुल बगल में है. एंड ट्रस्ट मी, यू गोना लव इट. See you in the next video.